Okay, so union and its executive, union executive and as well as state executive. So union executive is consist of what? So this is your prelims revision series. जो union executive देखिवा and state executive देखिवा. Union executive is consist of what? President, vice president, prime minister, councillor minister, attorney general of India. State executive is consist of state executive, governor, chief minister, state council of minister, CM, advocate general. Advocate general of state. Okay, so ये these are देखियो and as well as हमें पार्लियामेंट देखी देथिलु स्टेट लेजिस्लेचर समहा देखि देबा. सो ता पूर्वरु देखिवा फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट हमें देखि दिलु. नॉर्मली फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म्स, टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गोटेला फेडरल एंड यूनिटरी. फेडरल एंड यूनिटरी डिफरेंस कौन? यूनिटरी माने गोटेला सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल हला डुअल टाइप ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड एज वेल एज स्टेट्स. ओके, जिते आम फेडरल कथा भाबू से आम यूएस कथा भाबू एंड जिते यूनिटरी कथा फॉर्म भाबू से आम यूके कथा भाबू. सो फीचर याकर फीचर कौन? यूनिटरी गवर्नमेंट, सिंगल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन मे बी रिटेन और अनरिटेन, जोटा कि यूके रे अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन. नो डिवीजन ऑफ पावर, पावर गोटेला सेंट्रल सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सो टोटल पावर बेसिकली सब ये कंसंट्रेटेड सेंटर लेवल रे. कॉन्स्टिट्यूशन मे बी सुप्रीम और नॉट, मे बी सुप्रीम हे पारे या न हे पारे. एंड कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड एंड और फ्लेक्सिबल. द जुडिशियरी इंडिपेंडेंट हे पारे या मे बी नॉट इंडिपेंडेंट. लेजिस्लेचर मे बी बाइकैमरल एंड यूनिकैमरल. जेमती हमर इंडिया रे फेडरल यूनिटरी सिस्टम जदि देखिबा फीचर रे हमर बाइकैमरल हे जो, बट यूनिकैमरल इन केस ऑफ तुमरो यूके रे पाई जिवो. सिमिलरली फेडरेशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल जोंटे कि यूएसए. हमर मझी मझिका आमे फीचर देखिबा हमर कोनटा कोन फीचर. एंड इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हला फेडरल फीचर. एंड डुअल पॉलिटी, डिवीजन ऑफ पावर, supremacy of constitution and bicameralism. These are all federal feature. These are all federal feature. Then आमे देखियो इंडियन जोंटे कि कैरेक्टरिस्टिक देखिवा. कैरेक्टरिस्टिक पूर्व आमे देखियो कि इंडियन फेडरलिज्म देखिवा. इंडियन रे बेसिकली कोनटा यूनिटरी फीचर अछि एंड कोनटा फेडरल फीचर अछि. कोनटा यूनिटरी फीचर एंड कोनटा फेडरल फीचर अछि. जदि देखिवा रेसिडुअरी पावर विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज यूनिटरी फीचर. ता माने जिते बेले भी किछि लॉ बनेवार थिबो आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, ता बाहर किछि भी जदि पावर थिबो, इवन जो पावर मेंशन हेइ नथिबो सेही पावर अधिकार का पाखरे अछि सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट बाउंड्री अल्टरेशन विदाउट देयर कंसेंट. ता माने हमर को प्रकार फीचर अछि? indestructible union of destructible states. तमाने स्टेट को चाहिए यूनियन डिस्ट्रॉय करि परिबो, सेथि यूनिटरी फीचर. सिंगल सिटीजनशिप, ऑल इंडिया सर्विसेज, पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, इंटीग्रेटेड ऑडिट बाय द सीएजी, इमरजेंसी प्रोविजन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस बाय प्रेसिडेंट. एंड आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. Okay, these are जोटे कि मेजर यूनिटरी फीचर अच्छी. देन फेडरल फीचर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, 7th शेड्यूल अच्छी, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी एंड बाइकैमरलिज्म. इंटीग्रेटेड जुडिशियरी कौन हम? इंटीग्रेटेड जुडिशियरी इज पार्ट ऑफ यूनिटरी फीचर. इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम इज पार्ट ऑफ, नहीं मेंशन है, इज पार्ट ऑफ यूनिटरी फीचर. But independent of judiciary is part of
फेडरल फीचर से गुड़ा सब मन रखियो देन देखिया प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव रो फर्स्ट है किए ना प्रेसिडेंट हवा ପାଇଁ अगर क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 रे मेंशन अछि सिटीजन ऑफ इंडिया इति दरकार 35 ईयर एज दे दरकार क्वालिफाइड टू बी कंटेस्ट इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट और एनी लोकल और अदर अथॉरिटी जोंटा कि गवर्नमेंट कंट्रोल थिबो देन कंडीशन ऑफ ऑफिस पई आर्टिकल 59 not be a member of any house of the union or state legislature ये मेंबर है नथिबे ऑफिस होवा पई इफ जदी भी मेंबर थिबे तांको प्रेसिडेंट ऑफिस आसिया पूर्व ताको छाड़िया पड़ियो से सीटा ओके एंड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जोटा कि सही मैटर थिला एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जोटा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन सेमती किछि डिफाइन नाही और पार्लियामेंट किछि डिफाइन नाही एवं एटा समय टू समय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अनुसार इवॉल्व होईछि इट एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट और टू यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस जन राष्ट्रपति भवन से जो बसिबे ता पई तांको रेंट दवा को पड़िबो नाही सेइथिमे तांकर एचआरए नाही हाउस रेंटल अलाउंसेस तुमे जदी आजि जॉब पाइबो तुमरो एचआरए जोंडा मिलुथु एटा कटि जिवो यदि ओएस हेइगलो तो तुमरे रेंटल पेमेंट तुमको दवा को पड़िबो सरकार घर बने देछि बट तुमको सेथिरे रेंट कटिबो बट एठी राष्ट्रपति भवन जदी यूज करिवे सिए राष्ट्रपति सेथिरे तांगर रेंट कटिवार नाही सिए रहिबे 5 वर्ष रहिबे एवं एज वेल एज एमोलमेंट्स अलाउंसेस वगैरह ये सब मध्य पाई परिबे बट कथाला सेटा को कम करियबोनी से अलाउंसेस वगैरह आउ फ्यूचर रे कम करियबो बढ़ई परिबो सो द टर्म्स ऑफ द ऑफिस आर्टिकल 56 5 ईयर तांगर टर्म बिफोर 5 ईयर जदी हबे बाय रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को लिखिबे बाय रिमूवल ओनली फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट कौन आर्टिकल अंडर थाए 61 स्पेशल मेजॉरिटी ए कौन बड़े स्पेशल मेजॉरिटी एटा कौन हाईएस्ट 2/3 of more than 2/3 of total strength of the house both house और parliament रे ताको रिमूवल करिया पे केते जण रहिबा दरकार केते जण प्रपोजर रहिबा दरकार so impeachment charges can be initiated either house of parliament the charges should be signed by 1/4 of the member house एक कथा कहतली and 14 days notice ताको दिया जिवा दरकार 1/4 मेंबर ए कौ हाउस रो लेट से राज्यसभा चार्ज फ्रेम कला तो राज्यसभा मेंबर रो 1/4 राज्यसभा मेंबर रो 1/4 जदि लोकसभा फ्रेम कला तो लोकसभा मेंबर रो 1/4 ये चार्जेस फ्रेम करिया पई आगे एतिकी लोकंकर साइन सिग्नेचर दरकार देन तांकू 14 days नोटिस दिया जिवो देन आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजॉरिटी 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस इट सेंड टू अदर हाउस तो आगे चार्ज फ्रेम हैला चार्ज फ्रेम डिवाइड हबो डिस्कशन हो 14 दिन भीतर नोटिस पीरियड रहिबे एवं सही समय जदि पास हे गला देन पास हे गला पर आ गोटे हाउस को पठा जिवो सी भी इन्वेस्टिगेट करिवो इन्वेस्टिगेट करिके सी भी सही बड़ा रेजोल्यूशन पास करिया दरकार बाय 2/3 majority more than 2/3 of total strength. The president has the right to appear and to be present at such investigation. If other house जोंटा कि charges को रखिला then सेटा को पास हैला then president remove हो जाए. Election जानी जो normally indirect election हुए electoral college अच्छी एवं system of proportional representation by means of single transferable vote. Secret ballot थ्रो हुए सो इलेक्टोरल कॉलेज रे किए थांती वेरी इंपोर्टेंट इलेक्टोरल मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी जो थरे लेजिस्लेचर अछि यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज को माने इंक्लूड नथि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स
and Legislative Assembly of the Delhi and Puducherry, elected and nominated member of Legislative Council. Elected and nominated member of Legislative Council. Legislative Council कई member दे परिवे नहीं और nominated member of basically कौन ना only electoral member, only elected member participate करी परिवे in the election. केमती इलेक्शन हुए बैलेट पेपर दिया जीवो, बैलेट पेपर दिया जीवो जेमती सेते भोट दियंती से माने प्रेफरेंस देबे मोरे बुझैथिली सेते पढैथिली 1 2 3 4 अगेंस्ट द कैंडिडेट जेमती भोट ट्रांसफर जेमती कोन सिंगल ट्रांसफरेबल vote proportional division by means of single transferable vote. तो मैं प्रेफरेंस अनुसार फर्स्ट प्रेफरेंस जाको देइथिबो मेजॉरिटी जोटा फर्स्ट प्रेफरेंस देइथिबे से कैलकुलेशन हबो देन सेकंड प्रेफरेंस कैलकुलेट हबो थर्ड प्रेफरेंस फोर्थ प्रेफरेंस अराउंड वन कैलकुलेशन हबो. So this means that voter can indicate as many preference as there are candidate in the fray. ता माने opposition रो भी कैंडिडेट को से माने वोट देबे ताको प्रेफरेंस देबा को बाध्य बुझिला नहीं. So the first phase, the first preference vote are counted. जोंडे केबे कहउतली in case of candidate secured required quota in this phase the declare elected. जना पड़ जाए एक्चुअली फर्स्ट फेज रे जना पड़ जाए कहीं जे गवर्नमेंट साइड रो थाए तांकर ही बेसी मेजॉरिटी थाए तो मोस्टली बहुत ही डिफरेंस था एते डिफरेंस था कि जरूरत पड़ेनी सेकंड टाइम काउंट करिया पे अदरवाइज अगेन ट्रांसफर ऑफ वोट सेट इन मोशन तो सेकंड राउंड फिर पुनी कैलकुलेशन हबो. The ballot of the candidate securing the least number of first preference votes are cancelled and this second preference vote are transferred to the first preference. जोंटा कि other candidate पाई. This process continue till the candidate secure the required quota. So Parliament regulate the matter relating to election of president and vice president. तो ये प्रोसेस रे तुमरो इलेक्शन हुए नॉमिनेशन पाई 50 प्रपोजर रुहंती एंड 50 इलेक्टर रुहंती और सेकेंडर एज ए सेकेंडर माने सहमति देबे 50 जन प्रपोज करिवे कि ये प्रेसिडेंट हेले हबा दरकार एवं 50 जन इलेक्टर सेकेंडर इथरे रहिबा जरूरी. प्रेसिडेंट इज ए representative of the nation as well as people of the different states. So uniformity of representation of different states at the election according to population and number of elected MLAs of each state. So normally MLA ro value of the votes count हुए both MLA and as well as MP. Value of the votes of MLA केमती count हुए total population by total number of MLA. Okay into 1 by 1000. Value of the vote है total population of states by total MLA population by MLA 1000. आउ value of the votes of the MLA vary करे कहीं ना population vary करिवो MLA vary करिवो so total value भी मध्य vary करिवो. But in case of value of vote of MP it is uniform throughout the India. So value of the votes of the basically MP कौन ना total number of votes assigned to elected member of all state assembly जते सब total value of the votes of all assembly by total member of both houses. Let's say elected member 543 plus 245. 245 ने इलेक्टेड मेंबर हेले 233 ये डिवाइड कर दबो देले हे जो. सो ये टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स माने एमएलए रो ईच स्टेट रो एमएलए रो सब वैल्यू ऑफ द वोट हमें काउंट करी ताको रखी देले टोटल ऐड कर देले ऊपरटा देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपी केते जन अछंती दैट इज इलेक्टेड एमपी. सो सेटा बेसिकली इलेक्टेड हे गला. देन देखियो power and function of the president रो basically executive power अछि legislative power अछि judiciary power अछि तुमरो finance power हो emergency power diplomatic power military power ये सब president hold करंती. So president executive power देखियो article 53 provide that executive power can be exercised by president either directly or through the officer subordinated that is council of minister ताको एडवाइस देबे हैला. So all executive action formally taken in the name in his name and can make rules manner in which orders are made executed in his name.
appoints प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करती एवं अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करती जेहेतु अपॉइंट करती से प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर. This is also very. Then appointments of Attorney General of India and determine the remuneration पैसा केते दिन ऑफिस रहिबे सी भी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. अपॉइंट CAG जोंडे की चीफ इलेक्शन कमिशन एंड अदर इलेक्शन कमिशनर, चेयरमैन ऑफ UPSC, गवर्नर ऑफ द स्टेट, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमिशन मध्य ये अपॉइंट करंती. And can seek any information relating to administration affairs of the union and proposal for legislation from the PM. ये भी from the PM पाखरु कौन कौन proposal law बनिबो सी मध्य मागी पारंती. He can require PM to submit for consideration of the council of minister any matter on which a decision has been taken by minister but which has not been considered by the council. आउ कौन करि पारंती. He can appoint a commission to investigate into condition of SC, ST and other backward classes को appoint करंती. He can appoint interstate council. कौन आर्टिकल अछि 263 डायरेक्टली एडमिनिस्टर यूटी थ्रो एलजी जोटा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करंती एवं सेटा एडमिनिस्टर करंती. ये थिला एग्जीक्यूटिव पावर. देन लेके लेजिस्लेटिव पावर. लेजिस्लेटिव पावर सेति पई प्रेसिडेंट को पार्ट ऑफ पार्लियामेंट माना जाय. काहे कि बिकॉज़ ऑफ हिज लेजिस्लेटिव पावर. He summon and prorogue the parliament and dissolve the Lok Sabha. He can summon a joint sitting of the both houses. He can address the parliament at the commencement of first session after each general election and first session of each year. He can send message to House of Parliament regarding pending bills in the parliament or otherwise. He can appoint any member of Lok Sabha to preside over it, proceeding when the office of both speaker and deputy speaker fall vacant. वैकेंसी दिवस एही समय मध्ये अपॉइंट करि परिवे. सो कोन पई से पार्लियामेंट करंती गोटाला समन करंती, प्ररोग करंती, डिसॉल्व करंती, एड्रेस करंती एवरी ईयर या एवरी जनरल इलेक्शन परे. देन आउ कोन से साइन करंती. एक्ट हबो, बिल बिकम्स एक्ट हबो यांको सिग्नेचर. सेथि पई इट इज प्रेसिडेंट इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. It nominate 12 member of Rajya Sabha and 2 to Lok Sabha जोंटा की हटि जाइछि by 104 Constitutional Amendment Act. So his prior recommendation or for permission needed to introduce certain types of bill in the parliament. For example, the bill involving expenditure from Consolidated Fund of India or any bill for alteration of boundaries of states and creation of new states. तो सेथि पई प्रायर रिकमेंडेशन किछि जगह रे दरकार. जेते मानले मनी बिल केस रे भी प्रायर रिकमेंडेशन. बिल सेंट टू प्रेसिडेंट आफ्टर पास्ड बाय द पार्लियामेंट. ही कैन गिव असेंट, विथहोल्ड असेंट और रिटर्न द बिल. जदि मनी बिल हेइतो सेटा रिटर्न करि परिबे. काहे कि मनी बिल ऑलरेडी प्रायर रिकमेंडेशन तांकर निया जाई थाए. बट जदि से आउ थरे रिकन्सिडर पई पठैथिबे ताले रिकन्सिडरेशन जदि पई पठैथिबे तांको सेतौ चाहिले से पास. जदि माने पार्लियामेंट सेम बिल को आउ थरे पास करी पठै देला ताले तांको बाध्य. For bill passed by state legislature, for bill passed by state legislature, state legislature very important point उडा एटा देखि थियो. स्टेट लेजिस्लेचर जदि पास कला सेही समय से कोन करि परिबे. जदि गवर्नर रिजर्व रखथिबो, गवर्नर जदि रिजर्व रखथिबो प्रेसिडेंट पई, एही केसेस रे रिकन्सिडरेशन पावर बेसिकली एब्सोल्यूट पावर अछि प्रेसिडेंट. एब्सोल्यूट पावर अछि माने कोन, एब्सोल्यूट वीटो अछि हम पाखे. एब्सोल्यूट वीटो माने जदि भी स्टेट लेजिस्लेचर आउ थरे पास करि कि पठाए ताले प्रेसिडेंट बाध्य ने ताकू बिल टाकू एसेंट देबे बोली. On returning the bill for reconsideration, state legislature जोंटा कि obligatory नुहे बिल्कुल. So he can promulgate ordinance on the subject where parliament has the legislative power. Article 123. Provided the parliament not in session
immediate action required. So केते दिन दरकार maximum time duration गोटे ordinance रो maximum duration केते 6 month maximum duration. जदि जदि मानि नियो मोर एग्जांपल देबी जदि मानि नियो मोर पार्लियामेंट सेशन 3 मंथ भीतर हैला ऑर्डिनेंस इश्यू हबार पार्लियामेंट सेशन आसिला 3 मंथ भीतर ताले सेही केसेस रे ऑर्डिनेंस रो ड्यूरेशन केते रहइबो लेट्स से 6 weeks टोटल ड्यूरेशन गोटे ऑर्डिनेंस रो लेट्स से ऑर्डिनेंस आज इश्यू होला 3 मंथ परे पार्लियामेंट सेशन हैला तो टोटल ड्यूरेशन केते रहइबो मैक्सिमम ड्यूरेशन ए केसेस केते रहइबो कोन 3 months 6 week very good 3 months 6 week रहइबो मैक्सिमम ड्यूरेशन So president may withdraw an ordinance at any time. Withdraw करि पारि ordinance. Promulgation and withdrawal subject to council of minister approval हवा दरकार. council of minister बिना president तांको मन इच्छा किछि करि परिबे नाही. May have retrospective effect and may modify or repeal any act of the parliament or even another ordinance को मध्य. माने ordinance रो power same as a law of the parliament. It may also amend or alter a tax law but not amend constitution. तमाने ordinance through रे आमे constitutional amendment करि परिबो नाही. This is very important. Through ordinance we cannot amend the constitution. So immediate legislation पई गोटे circumstances दवा दरकार हाउस रे but नदेले किछि होबनी. Such power not found in most democratic constitution including USA and UK सेटा भी नाही एठी सेठी हमर इंडिया रे अछि. आउ कोन करंती प्रेसिडेंट ये CAG UPSC फाइनेंस कमिशन एंड अदर मेंबर रिपोर्ट्स को से पार्लियामेंट रे जाकी रखंती. ही कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार काहेकि ना जते सब यूटी अछि ये यूटी रो से बेले हेड प्रेसिडेंट आउ तांक सी हां एनसीबीसी सर एनसीएसटी गुडे सब प्रेसिडेंट एठी जे बसा रिकॉर्ड Financial power. Prior recommendation for introduction of money bill in parliament is required. तांकर पूर्वरु recommendation जरूरी then money bill हबो. Causes to be laid annual final statutory budget before the parliament. No demand or grant can be made except his recommendation. माने consolidated fund of India ru can make advances out of contingency fund of India in unforeseen situation. Contingency fund of India कहाँ अंडर था है फाइनेंस कमिशन अंडर रे फाइनेंस कमिशन साइन करिकी बाहर करि परिबो पैसा ए सॉरी फाइनेंस कमिशन रे फाइनेंस मु त नुहे कहली हेतरे तो अमाउंट पछला बाबू सेते डाउट रे थिबो तम सब नै फाइनेंस सेक्रेटरी very good. So finance commission basically after every 5 year मध्ये ये अपॉइंट करंती फाइनेंस कमिशन अंडर आर्टिकल 280. Then judiciary power, he can appoint chief justice, judges of Supreme Court and High Court. He can seek advice from Supreme Court in the questions of law or fact. Can grant pardon, reprieve, respite, remission, punishment, suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offences by the court martial or against union law or sentenced to death. कोर्ट मार्शल केसेस को कितने हुए कोर्ट मार्शल मिलिट्री फोर्स खाली बसी भकुआ वाली देखाओनी किछि लेखि जाओ काम आसीबो
देखिले देखिए रोथुओ इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ा लिखि दियो जोंटा लागुच तुम नुआ पॉइंट जोंटा तुम मने नहीं लिखि दियो नले तुम भाइबो ये मजा तो लागुच सब तो जानी लगुच भूली जीव ओके सो पार्डन केतळे हुए रिमूव्स बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस से जदी हेइथिबो सेटा केवल एक्सक्लूसिव पावर अछि प्रेसिडेंट रो तांको पार्डन देइ दबार आउ गवर्नर भी इवन इन केस ऑफ स्टेट लॉ रे भी डेथ सेंटेंस जदी हेइथिबो जनकू सेई केसेस रे पार्डनिंग पावर अछि कहा पाखरे पावर प्रेसिडेंट पाखरे सो पार्डन माने सब किछि माफ कर दिया जिवो कन्विक्शन एज वेल एज सेंटेंस रिप्राइव stay of the execution of a sentence especially that of death for a temporary period respite denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special fact like physical disability pregnancy ये सब cases respite छूट किस समय पे रिमिशन माने भी छूट बट सेंटेंस रो नेचर चेंज हो नहीं जदि डेथ जदि लाइफ इम्प्रिजन थी लाइफ इम्प्रिजन रहिबो बट सेटा को टिके कम कर दिया जो 10 वर्ष 14 वर्ष अछि 10 वर्ष कर दिया जिवो किंबा सिंपल इम्प्रिजनमेंट अछि 6 वर्ष पई सिंपल इम्प्रिजनमेंट 4 वर्ष हे जिवो या 3 वर्ष हे जिवो सो नेचर चेंज हे जिवो केवल सॉरी नेचर चेंज होबनी केवल सेंटेंस ऑफ पीरियड चेंज हे जिवो देन कम्यूटेशन हैला कोन एटा हला फॉर्म ऑफ पॉलिशमेंट चेंज हे जिवो कम्यूटेशन डेथ सेंटेंस अछि ताको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हे जिवो लाइफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अछि ताको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हे जिवो तो ई केसेस रे कम्यूटेशन माने किछि चेंजेस हे जो नेचर चेंज हबो सो पार्डन रिप्राइव रेस्पाइट रिमिशन एंड कम्यूटेशन जेमिति रिप्राइव को केसेस गोटे एग्जांपल तुमे मूवी देखि थिबो निर्भया केस हैं निर्भया केस रे सबले रिप्राइव करथबे ना माने ना निर्भया केस तो केस अछि से तो तार अलगा लॉ रो ये थिला जेमिति जवान मूवी रो दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट हेइथिला त ताको सेंटेंस दिया हेइथिला माने फांसी दिया होतला तो सेते ताको 5 वर्ष दिया गला टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ बेसिकली एग्जीक्यूशन हबो बट टेम्पोररी पीरियड रो ताको छाड़ा जिवो बहुत मूवी अच्छी रिसेंटली एटा देखथियो ना मिलिटरी पावर सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस एंड अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट वार पीस ये सब यही डिक्लेयर करिए बट ये किसी करंदी नहीं डिप्लोमेटिक पावर इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह यांको नारे ही सब हुए इंडिया को इंटरनेशनल फोरम रे यांको नारे सब रिप्रेजेंट करंती सेंड्स एंड रिसीव डिप्लोमेट्स एम्बेसडर हाई कमिशन ये सब यही पठाती इमरजेंसी पावर तीन प्रकार जानिछ 352 356 360 एंड 365 बेसिकली प्रेसिडेंट रूल जतले सेंटर डायरेक्शन स्टेट फॉलो न करिवो बाकी नेशनल इमरजेंसी 352 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 ये सब आमे जानिछे देन वीटो पावर तीन प्रकार गोटा एब्सोल्यूट वीटो सस्पेंसिव वीटो पॉकेट वीटो सो हमर गोटे क्वालिफाइड वीटो अछि जोंडे कि हमर नाही सेटा यूएस रे अछि सो एब्सोल्यूट वीटो कोन जे सेतळे बिल को सी आउ देबेनी ताको परमिशन देबेनी ताको सिग्नेचर मारिबे नाही बट एटा प्रेसिडेंट पाखर नाही कहले चले केतळे अछि ओनली इन केस ऑफ प्राइवेट बिल और व्हेन कैबिनेट रिजाइन न्यू कैबिनेट एडवाइस नॉट टू गिव हिज एसेट सही कंडीशन रे स्टेट बिल एठी केवल सेंटर बिल कथा कहब से बाकी स्टेट बिल केसेस रे ताको पाखरे अछि एब्सोल्यूट पावर जेतरे गवर्नर रिजर्व रखथिबे गोटे बिल सिमिलरली सस्पेंसिव वीटो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज वीटो व्हेन returns a bill for reconsideration of the parliament माने किछि दिन पई आ सस्पेंड हेक रहिला आ मनी बिल केस रा सस्पेंसिव वीटो अछि हैं काई की ऑलरेडी प्रायर रिकमेंडेशन से दे दी थांती
Then pocket veto, neither ratify nor reject or return the bill but simply keeps the bill pending for an indefinite period of time. Pocket veto माने pocket रखिछंती आ बोली जाइछंती. आमर गोटे लेखना अच्छी आम कन्स्टिट्यूशन रे कि प्रेसिडेंट केते दिन भीतर साइन करके देबे सेटा तांकर किछि टाइम लिमिट ना. बट यूएसए रे अछि सेटा 10 दिन. बुझिला नै. तो टाइम लिमिट नाही माने प्रेसिडेंट देई पारंती एबे देलेनी गला मासे गला 2 मास गला 3 मास गला तांको इच्छा ला देले नाही सिग्नेचर के तांको बाध्य करि परिबनी कि केबे देबो सिग्नेचर काहे कि देयर इज नो टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड. हां हां होय हेछि. So no veto power with president for constitutional amendment bill. Constitutional amendment bill case रे veto power नहीं. 24th Constitutional Amendment Bill 1971 made it obligatory for the President to give his assent to a constitutional amendment bill. So constitutional position of President, 42nd Constitutional Amendment Act 1976 made President bound by the aid and advice of Council of Minister headed by Prime Minister. Article 74 na 75 responsibility 75 appointment एते सी जानि छ कि पहले सब टैलेंटेड अछि सब नै मोई भूली जाई छी आ. ओके 42nd Constitutional Amendment Act कहला कोन बाउंड. Then 44th Constitutional Amendment Act authorize the president to may return a matter once for the reconsideration, है ना. But reconsideration be binding. Then president can act on his discretion without the advice. कौन केतले केतले तांको डिस्क्रिप्शन रे काम करि परिबे जेतेले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट हबो. आ प्राइम मिनिस्टर को भी मन इच्छा थोड़ी ना करि परिबे जेतेले हंग असेंबली थिबो जेतेले नो पार्टी इन मेजॉरिटी. आउ कोन करि परिबे डिस्क्रिप्शन अछि जेतेले काउंसिल मिनिस्टर मेजॉरिटी अचीव करि परिबे नाही. या जेमति आमे एबे गोटे मानिने नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू हला पार्लियामेंट रे से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हे गला पार्लियामेंट रे. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हे गला माने कोन हबो गवर्नमेंट को फॉलो करिया पड़ियो.
एम आई ऑडिबल नाउ सो ये केसेस रे डिस्कशन करि परिबे जेतले प्रूव करि परिबेनी कॉन्फिडेंस देन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एंड इफ काउंसिल मिनिस्टर हैज लॉर्डशिप मेजॉरिटी बस सही बढ़िया केसेस रे तुमरो डिस्कशन पावर अछि प्रेसिडेंट एम आई ऑडिबल नाउ गाइस देन देखियो वाइस प्रेसिडेंट सेम सिटीजन ऑफ इंडिया इधर का 35 इयर्स एज मेंबर ऑफ राज्यसभा पे क्वालिफाई हेथिवा दरकार क्वालिफिकेशन में बेसिकली नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेम जिंस sitting president or vice president of union or the governor of any state a minister of union or any state is not deemed to hold any office of office तामाने sitting president हो vice president हो automatically सेमान को office of profit रे count करा जिवो नहीं and MPs and MLAs are also eligible but if elected as a vice president तांको तांकर ऑफिस को छाड़िया को पड़िवो the nomination of candidate सेठी थिला केते president पई 50 एठी 20 and 20 proposer 20 seconder यांकर भी इलेक्शन हुए ये यांकर इलेक्टोरल कॉलेज रे किए रुहंती बोथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड आ लिखिया दरकार नहीं बोथ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ने सब आसी गले हो सेम इलेक्शन प्रोसेस कोन सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट टर्म 5 ईयर रिजाइन देबे कहा को देबे प्रेसिडेंट को री इलेक्शन पई एनी नंबर ऑफ टाइम ये हेई परिबे वैकेंसी यदि हैला केमती हेई पारे रेजिग्नेशन ताको रिमूवल करा जिवो बाय डेथ रिमूवल केमती करा जिवो को मेजॉरिटी यांको रिमूवल करा जिवो अरे को इफेक्टिव मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी when he become disqualified hold the office so in last four condition that is election to fill the vacancy held by the president छाड़ किछ नहीं इफेक्टिव मेजॉरिटी माने कोन सो तांकर मेन पावर एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से जेमिति स्पीकर ऑफ लोकसभा भलिया ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रे काम करंती ए मॉडल टा कोंठु आसी हमरो ए मॉडल टा कोंठु आसी कोंठु यूएसए अरे टोटल स्ट्रेंथ कोड आछियो अरे टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी इज इफेक्टिव स्ट्रेंथ ता ही कैलकुलेट होबो एठी सेटा हला इफेक्टिव मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी बट इज कंसीडर एज इफेक्टिव स्ट्रेंथ माने कोन टोटल रिजाइन हो जाइतिबो डेथ हो जाइतिबो सी सब वैल्यू दैट मींस वैकेंसी को माइनस कर दो मानिनियो वाइस प्रेसिडेंट नहांती ठीक अछि वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस रे नहांती कोन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रोल प्ले करि परिबे नहीं करि परिबे हाईएस्ट प्रेसिडेंट तो 1000 को अपॉइंट करि परिबे नहीं जदि वाइस प्रेसिडेंट नहांती तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट काम चली परिबे नहीं सर जदि प्रेसिडेंट नहाती वाइस प्रेसिडेंट करि परिबे नहीं ओके मैक्सिमम पीरियड हला 6 मंथ पर्यंत करि परिबे जदि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहाती चेयरमैन भलिया डेप्यूटी चेयरमैन काम करि परिबे नहीं
डेप्यूटी चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट रे काम कर परिबे वाइस प्रेसिडेंट काम करि परिबे ना चेयरमैन रो काम करि परिबे वेरी गुड सो डेप्यूटी चेयरमैन परफॉर्म करिवे जे चेयरमैन जे लेट से एज्यूम करो प्रेसिडेंट ऑफिस टा वैकेंसी अछि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रोल प्ले करि परजंती जदि वाइस प्रेसिडेंट रोल प्ले करिवे से डेप्यूटी से चेयरमैन हेई परिबे नाही राज्यसभा रो तो सेही कंडीशन रे डेप्यूटी चेयरमैन जो राज्यसभा से चेयरमैन भलिया रोल प्ले करिवे रिमो हां स्टेटमेंट रे जदि वाइस प्रेसिडेंट है सेटा भूल हो यस वाइस प्रेसिडेंट को जदि आमे कहबा कि डेप्यूटी चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट भलिया रोल प्ले करिवे सेटा भूल हो सेटा चेयरमैन भलिया रोल प्ले करिवे इम्पीचमेंट हबो जोंडा कि इफेक्टिव मेजॉरिटी जोंडा कहउथली से जो लोकसभा राज्य सेटा को मेजॉरिटी राज्य लोकसभा He can be removed resolution of the Rajya Sabha passed by an effective majority एवं सेई जो एग्रीड माने लोकसभा रे मध्ये सेटा को सहमति दबा दरकार माने सेटा भी इफेक्टिव मेजॉरिटी पास होबा दरकार बोथ हाउसेस एवं 14 डेज रो एडवांस नोटिस तांको दबा दरकार हां आ गुटे इंटरेस्टिंग कथा एटा जदि क्वेश्चंस पचला को पिला करि परिबेनी कोन देयर इज नो ग्राउंड किछ ग्राउंड नहीं तांको रिमूवल करिवार देन देखिबा पीएम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर कौन कहउथलो दीटा देखो इफेक्टिव मेजॉरिटी लोकसभा वाइज तो सिंपल मेजॉरिटी काहे की के कहला अच्छा रेजोल्यूशन जो पास हो सेडा अलग राज्यसभा रे रेजोल्यूशन पास होबो इफेक्टिव मेजॉरिटी नहीं की और रेजोल्यूशन पास अलग अलग देखे रेजोल्यूशन पास अलग अलग कौन अलग अलग इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड लोकसभा वाइज सिंपल मेजॉरिटी ठीक अछि सो राज्यसभा बेसिकली हां रिजोल्यूशन इनिशियली राज्यसभा रे से जेहेतु चेयरमैन अछंती राज्यसभा रो ही पास हो इफेक्टिव मेजॉरिटी appointment of prime minister so prime minister is appointed by president under article 75 the leader of majority party in the lok sabha when no party has a clear majority president may exercise his personal discretion in appointment of prime minister power and function of prime minister he is the head of council of minister power to distribute portfolio among the minister reshuffle the portfolio recommends person who can be appointed as a minister by president preside over meeting of council of minister influence its decision guides direct control coordinate activity of all ministers he can ask a minister to resign he can bring about the collapse of the council of minister by resigning from the office जदि पीएम रिजाइन दे देले पूरा सरकार फॉल हो जिवो बहुत जल्दी एटा हवार अछि इन रिलेशन विथ प्रेसिडेंट नीतीश बाबू जम करियर अछि देले कोलैप्स हियो okay the principal channel of communication the principal channel of communication between president and council minister ke prime minister he advise president with respect to appointment of important officials communicate president all decision of council minister relating to administration of union and proposal legislation parliament relation he is the leader of party in power he advise president with respect to summoning and prorogation of the session of the parliament आमे देखु नथले प्रोरोग करनती समन करनती बट कहार एडवाइस रे
प्राइम मिनिस्टर एडवाइस रे ही कैन रेकमेंड रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा सो प्रेसिडेंट आमे देखिले रिजोल्यूशन करि परिबे बट प्रेसिडेंट निजे करि परिबेनी कहार रेकमेंडेशन रे प्राइम मिनिस्टर रे अनाउंस गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो द्रौपदी मुर्मू सब वर्ष आसिक पढ़ती मो सरकार एमती कौन करी ये किए कहती प्राइम मिनिस्टर कहीकि सब दियंती या कहे रूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स इंडिया in important international forums and platform meeting with counterparts from other countries making speeches to the diaspora एटा करूछन जे कि प्राइम मिनिस्टर यूएस गले जे कलेनी बुझला नहीं so other power and function of prime minister he is the chairman of niti aayog he is the chairman of niti aayog national integration council interstate council national water resources council and some other bodies this is very important he leads his political party in election and public rallies crisis manager in chief at political level during emergency okay this is very important then some important article related to pm and council of minister article 74 council of minister headed by prime minister aid and advice to president article 75 prime minister will be appointed by president prime minister will be appointed by president article 75 1 is only total council members shall not be more than 15% of the total member of house already this सेटा अलग ना सेटा दिल्ली स्टेट रे जतले हेतला 233 ए सेइथरे हेतला एवं दिस amendment done in 91st constitution amendment act and state case रे 164 1a so ये जो amendment हेतला दीटा state case रे जो लेज सेंटर रे पार्लियामेंट रे हेतला एंड जो लेज ये रे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 15% total member देखि रखियो article 75 1a article 75 1b if disqualified under anti defection law then also disqualified to be a minister जदि एंटी डिफेक्शन अंडर डिस्क्वालिफाई हो जाती ना then council is collective responsible to Lok Sabha article 75 3 this is the feature of parliamentary form of government parliamentary form of government the most important feature is council minister shall collectively responsible to parliament and Lok Sabha in particular so directly Lok Sabha लिखा है why not Rajya Sabha house of peoples को काहे की why council minister collectively responsible to Lok Sabha not Rajya Sabha Direct election, no? what direct elected By the people. any idea Lok Sabha decides the formation of the government Lok Sabha decides the council of minister to be formed or not so that is why they are responsible to Lok Sabha article 75 4 oath of the office and secrecy by the minister oath niyati se mane then 75 5 within 6 months of a person being appointed minister a person has to become a member of parliament article 75 kete bada dekhuଛ to nahi
Done. Then constitutional position of PM. In the scheme of parliamentary system of government, president is nominal executive, that is de jure executive, and prime minister is the real executive, that is de facto executive. It means the president is the head of the state while the prime minister is the head of the government. Prime minister is head of the government, head of the state is, that is political head is president. As per Dr. B.R. Ambedkar, if any functionary under our constitution is to be compared with the US president, he is the prime minister of India, not the president. सेथिपाई आमर पीएम तांकर प्रेसिडेंट सहित जाई मिसंती, आमर पीएम फ्रेंच रो प्रेसिडेंट सहित मिसंती, राइट. देन देखिवा काउंसिल मिनिस्टर. So council of minister, then cabinet minister composition देखिए one by one. Cabinet minister are those minister who holds very important portfolio like defense, home, finance, foreign affairs, etc. They are the highest in status, emoluments, powers. It is this minister who constitute the cabinet, which has been described as the wheel within a wheel. Wheel कोटा council minister, ता भितर आ गोटे wheel. So their number varies from time to time, but seldom exceed 20. Maximum strength है 20. Cabinet minister collectively formulate the policy of the government and are entitled to attend all meetings of the cabinet. Cabinet रो all meeting को सेवन attend करिवे एवं government रो सबु policy रो highest decision making body है कैबिनेट. आउ काउंसिल मिनिस्टर स्ट्रेंथ केते ही परिबो, मैक्सिमम स्ट्रेंथ काउंसिल मिनिस्टर रो 15%. एबे कहलिन 10% कोड होसिला 15% को आर्टिकल हैला 91 अमेंडमेंट को आर्टिकल है 75 रो कोन 1 ए एबे कहली दी सांग जा भूल जाउछ नहीं. सो 15% माने केते हेबे 15% कहारो पार्लियामेंट टोटल ना कहारो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट तो ओनली लोकसभा खोजा ओनली लोकसभा ना बुथ लोकसभा राज्यसभा राज्यसभा वेरी गुड ओनली लोकसभा सी राज्यसभा रही पारे बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्ट्रेंथ जो डिसाइड करियो कि लोकसभा काहे दे आर कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल टू लोकसभा. ता माने नुहे सब लोकसभा मिनिस्टर हेबे मिनिस्टर हेई पारि बट मिनिस्टर स्ट्रेंथ लोकसभा अकॉर्डिंगली हबो. लॉजिक अछि ना ता पछरे एमिति करा है. सो 15% माने केते हबो हां तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ तांकर हला 80 आ ये आंकर हला काउंसिल मिनिस्टर स्ट्रेंथ हला 80 कंपोज ये कैबिनेट रो 20. So main function of council of minister are mainly to aid and advise the president in exercise of the function. Since minister is the highest organ of the ministry is the highest organ of the government of India, it determines all the policy relating to country's administration. It also has the responsibility of formulating internal and foreign policy. Peace and prosperity of the country depends largely on the policy formulated by the ministry. The minister are not only the head of the executive department but are also the important member of the majority party of legislature in the legislature, or at least having majority support in the legislature. The ministry also plays a key role in determining the economic activity of the state. Currency, banking, commerce, trade ये सब काम रे
रोल प्ले करती. So constitutional provision देखिबा. It explicitly mention the constitution kon article 352 added through 44 constitution amendment act 17 1978 kon na the cabinet works on the principle of political homogeneity. What do you mean by political homogeneity? So single ideology. Same ideology, same focus रे काम करिवे. The collective responsibility obliges the minister to hold same views and to champion the same policy. The difference between minister are ironed out in the closed door meeting of the cabinet. In public they must give impression of solid unity. देखुने नहीं सरकार बाहर की चीज सुनी परछ सब ठीक ठाक भीतर बाड़ी पटेला चल बाहर सब आज्ञा सार कहते ये कहते. So functions of the cabinet. The cabinet responsible for policy formulation both with regard to national matters. All policy decisions are taken by consensus and are convened by the prime minister to the president. So difference देखिए council of minister and cabinet. Council of minister is a wider body 60 to 70 member. Cabinet is a smaller body 15 to 20 members. कहीं कि जो डिसीजन निया जाए हाट भीतर डिसीजन तो नहीं होबनी गोटे हाट बसथि धर ता भीतर डिसीजन किछि नहीं परियो 70 80 जन बसिले माने हाट हाट भीतर ए ये कहला ए मु एटा कहली से सेटा कहले चल तो हुआला हबो तो सेथि पई टिके ज्ञानी मानी लोकन को या भीतर बसेले 15 जन तो जन जन को पचार देले सामनार बसिकी तले जाना पड़ जिवो इन्फॉर्मेशन टा क्लियर हे जिवो. But decision तो mostly guide करिवे by the prime minister. It includes all category of minister जन कि minister of state, deputy ministers, independent minister of state with independent charges, cabinet minister ये सब तांको भितरे ही रही जाउचंती. आउ येटा council of minister गोटे part है ना. Then it vested with all the power but in theory but in practical they are the powerful. Cabinet are the most powerful body of a government. Cabinet will direct the council minister. एवं council minister कौन करिवे determine करिवो किए cabinet. It implements the decision taken by the cabinet. ये cabinet जहाँ decision नबो ये implement करिवो. ये कौन करिवो supervise करिवो. So it is a constitutional body. 74. It did not find any place in the original text of the constitution, but for the 44 amendment act hela एथरे को मेंशन करा गला कि कोन हेतिला ना प्रेसिडेंट रूल जते लागू थिला सेतले कैबिनेट रो डिसीजन को सेही भले किछि कैबिनेट डिसीजन देछि तो मानियक पडुथला ओराली भी तो सेइठो दिया गला कि कैबिनेट गुटे रहिबो एवं कैबिनेट डिसीजन must be communicated with paper. सेइठो ये टर्म आसिला कैबिनेट आ कॉन्स्टिट्यूशनल ताको ऐड करा गला 44 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट. So it is collectively responsible to lower house of parliament. It enforces the collective responsibility to council minister to lower house. Basically सब दी जन जाको lower house को enforce. Then देखिबा attorney general. सामार यूनियन एग्जीक्यूटिव रु कोन कोन देखिले प्रेसिडेंट देखिले वाइस प्रेसिडेंट देखिले प्राइम मिनिस्टर देखिले काउंसिल मिनिस्टर देखिले आ लास्ट कोन अटॉर्नी जनरल. So Attorney General, the highest law officer of the country, Article 76.
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती क्वालिफिकेशन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो क्वालिफिकेशन हवा दरकार से भाई हवा दरकार ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट हैव बीन जज ऑफ सम हायर हाई कोर्ट फॉर 5 years or an advocate of same high court for 10 years or an eminent jurist in the opinion of president टर्म है किसी जना ना जिते पर्यटन गवर्नमेंट अच्छी जिते चाहिए हटे दे पार ग्राउंड ऑफ रिमूवल कौन नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम ही मे क्विट रेजिग्नेशन दे प्रेसिडेंट को कन्वेंशनली ही रिजाइन व्हेन गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन और रिप्लेस्ड गवर्नमेंट ए चेंज हो ये तुम बर्तमान किए अच्छा अटर्नी जनरल किए गिरीश मुर्मू किए अच्छा तुषार मेहता बाहर बेटा बाह नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन he receives such remuneration यदि प्रेसिडेंट जहाँ कहे से अनुसार पैसा पाइबे ड्यूटी कौन तांकर काम होला गवर्नमेंट जेठी जहाँ हल्ला हवार अच्छी सी जाइए छिड़ा हे कोर्ट रे है ना एंड परफॉर्म सच द अदर ड्यूटी लीगल कैरेक्टर से सब जाई करिवे जहाँ काम दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिहाफ रे जाइए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब जाइए छिड़ा हे टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 कौन एटा एडवाइजरी जुरिडिक्शन कौन सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस देबे इट इज नॉट बाइंडिंग यस और ये हाई कोर्ट जाई भी अपीयर हेई परिबे जदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया र कंसर्न थिबो राइट्स कौन in the performance of the official duty attorney general has right to of the audience in all courts in the territory of India he has the right to speak to take part in the proceedings of the both house of parliament जानिच but even joint sitting रे participate करि परिबो any committee of parliament जे तांको member थिबे but कथाला without any vote एटा मन रखियो he enjoy all the privileges and immunity that are available to the member of parliament so सी member of parliament जो बढ़िया immunity थाई privilege enjoy करंती limitation imposed on attorney general he should not advise or hold a brief against the government of India government of India against किसी कोई परिवेनी he should not advise or hold a brief cases in which he called upon for advice or appear government of India he should not defend accused person in criminal prosecution without the permission of government of India he should not accept appointment or as a director of any company से हेई परिवे नहीं so he does not fall in the category of government servant he is not debarred from private legal practices but करी परिवे डिपेंड करेगी गवर्नमेंट अलाउ करिया दरकार they are also a so ये गवर्नमेंट सर्वेंट नुहति they are also present the office of solicitor general of India and additional solicitor general जोटा कि extra constitutional to assist the attorney general of India in fulfilling the official duties in 2017 Delhi High Court ruled that the office of attorney general does not come under ambit of RTI act काहे ये public service नुह as it is not a public authority under section 2H of the right to information act so attorney general gives consent for contempt of the court proceeding रे मध्य ये दियंती क्लियर हला attorney general तांकर फंक्शन तांकर डिटेल्स देखी सारी कहब जो पचारा पर देखियो जानी पेपर सब इंडिया तो डेली बाहर है cabinet committee this is also very important
सो बेसिकली कामटा को बांटिया ये सब कमिटी बनाई. So feature of the cabinet committee, it is extra constitutional nature. They are mentioned in the Government of India Transaction Business Rule 1961. This is very important. Two types of a committee is standing committee, which is permanent in nature, and ad hoc committee, which is temporary in nature. Set up by Prime Minister according to the requirement of the time and requirement of situation. Their number, nomenclature and composition समय को समय वेरी करे. Then composition of the cabinet committee. Cabinet committee कथा कहूँ. They usually include only cabinet minister. However, no cabinet minister are not debarred from their membership. Debarred माने बुझी पारछे तो? Non cabinet minister सबू नॉर्मली कैबिनेट मिनिस्टर थांती, बट नॉन कैबिनेट मिनिस्टर भी से रही परिवे. They not only include ministers in charge of subject covered by them, but also include their senior minister. Their membership varies from 3 to 8. Head of the committee कौन? They are mostly headed by prime minister. A committee रो cabinet committee head थांती सबले prime minister. Sometimes other cabinet minister also act as a chairman. जदि prime minister तांको appoint करिथिबे. But in case of prime minister, a member of committee, he or obviously automatically member हेबे एवं preside करिवे. जदि prime minister सही सर. The prime minister is part of 6 panel except for the committee on accommodation and committee on parliamentary affairs. बाकी आउ सब कैबिनेट कमिटी रो प्राइम मिनिस्टर अछंती. देखिया वन बाय वन कैबिनेट कमिटी. कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी, ये सब देखिथिबो. Function of cabinet committee: sort out the issues, formulate the proposal for cabinet, reduce the enormous workload of the cabinet, facilitate in-depth examination of policy issue for effective coordination. So the cabinet can be review their decision also. So if you know cabinet committee, basically at present 8 cabinet committee are functional. The political affair committee, very important, deals with domestic and foreign affairs. Prime Minister head अछंती. Economy affairs committee, direct and coordinate government activity in economy affairs. he भी Prime Minister head. Appointment committee, जोंटे की higher level officials मान को जो appoint करा जाए, ये भी president Prime Minister रहिबे. Political affair committee एवे सब सुनिथिबो न्यूज रे एगुडा सब आस्थिबो न्यूज पेपर रे. Economy affairs committee, appointment committee, cabinet committee on security. This is also very important. ये भी Prime Minister head रहंती. Deals with issue relating to law and order, internal security, etc. Parliamentary affairs committee, ये ला political affair committee, बुझे नहीं? हाँ ये ला parliamentary affairs. ये भी also very important. Parliamentary affairs committee looks after the progress of government business in parliament. ये भी headed by prime minister. हाँ? हाँ, committee accommodation और parliamentary committee. हाँ ये भी केवड़े थी वो. यानी कैबिनेट मिनिस्टर ही थी वे सही था वित्रो. Parliament affairs committee looks after the progress of government business in parliament. Cabinet committee on accommodation determine the rules with regard to allotment of government accommodation. Home minister ithra thanti. Cabinet committee on investment and growth. Its function is to consider measure to promote investment growth, consider various measures for improving ease of doing business. ये भी prime minister. And cabinet committee on employment and skill development. ये भी prime minister. Of all these cabinet committee, the most powerful is political affairs committee. जोटा कि एटा ये सब डिसीजन निये. It is also described as a super cabinet.
पॉलिटिकल अफेयर कमिटी। कार ना यार मिनिस्ट्री कौन अच्छी ओके नेक्स्ट देखिए पार्लियामेंट्री कमिटी। द पार्लियामेंट्री कमिटी मीन्स कमिटी that appoint or elected by the house or nominated by speaker or chairman, works under the direction of speaker and chairman. It presents its report to the house or to the speaker or chairman. It has a secretariat provided by Lok Sabha and Rajya Sabha. So classification देखिए parliamentary committee रे स्टैंडिंग कमिटी जे की परमानेंट नेचर जोटा कि पब्लिक अकाउंट कमिटी एस्टिमेट कमिटी तुमर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स दीज आर स्टैंडिंग कमिटी देखियो आगो को देन एडहॉक कमिटी टेम्पोररी कमिटी जोटा कि कमिटी ऑन एमपी लेड स्कीम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एडहॉक कमिटी हैव बीन टू सब पार्ट जोटा गोटेला सिलेक्ट कमिटी गोटे स्पेसिफिक पर्पस पई एंड मेंबरशिप लिमिटेड टू वन हाउस ओनली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी गुडे थाए जोटा कि बोथ हाउस रो पार्लियामेंट थांती। सो फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी द मेंबर ऑफ द हाउस गेट ग्लिम्पसेस इनटू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड कंस्ट्रेंट। ये जो पार्लियामेंट्री कमिटी देखुछ एथिरे खाली गवर्नमेंट रो लोक रहंतनी आमे देखले कैबिनेट कमिटी रे मोस्टली गवर्नमेंट रहंती बुझले नहीं कैबिनेट मिनिस्टर मोस्टली रुहंती आउ अलगा मिनिस्टर माने रुहंती बट पार्लियामेंट्री कमिटी रे सबु पार्टी रो मेंबर माने इन्वॉल्व थांती। तो बेसिकली गवर्नमेंट रे न रही कि भी से माने गवर्नमेंट भीतर कोन केमती काम होची सेरा जानिया पे हेल्प करे। मेंबर्स कैन एंगेज विथ डोमेन एक्सपर्ट। कमिटी आल्सो प्रोवाइड ए फोरम फॉर बिल्डिंग कंसेंसस अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज। पार्लियामेंट्री कमिटी इन्वेस्टिगेट इश्यूज बिल प्रपोज so that parliament can be well informed before making the decision of national importance। सरकार डिसीजन नबा पूर्व फाइनाली पार्लियामेंट पास होगा पूर्व आगे ये कमिटी पाखरे जीवो ये कमिटी माने सबु पार्टी रो देखिबे देखिकी डिसाइड करिवे। इट एनहांस द एबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट टू स्क्रूटिनाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी ठीक करू जे नहीं ये पार्लियामेंट रो अलगा मेंबर माने को अलगा पार्टी रो मेंबर को एनाबल करे। सो ता भितरो सबुटु इंपोर्टेंट कमिटी हला मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी हला फाइनेंस कमिटी। से फाइनेंस कमिटी रे तीनटा कमिटी अछि गोटेला पब्लिक अकाउंट कमिटी एस्टिमेट कमिटी आ गोटेला कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अकाउंट कमिटी रो कंपोजिशन हला 22 मेंबर 15 जन लोकसभा 7 जन राज्यसभा। ए मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल फॉर द इलेक्शन टू दिस कमिटी 1 ईयर टर्म। सो बेसिकली सब मेंबर ऑलमोस्ट हे जानती मेजॉरिटी पार्टी रू मेंबर है। सो मेजर फंक्शन कोन इट ascertain whether the money granted to parliament has been spent by the government within the scope of the demand। ये ठीक से खर्च होइछि ना नहीं एवं एटा देखिया पई कोन करे एवरी ईयर सीएजी रिपोर्ट पब्लिश करे। सीएजी रिपोर्ट जो पब्लिश करे से सीएजी को बेसिकली पब्लिक अकाउंट कमिटी पीएसी बेसिकली देखे कि सीएजी जो एवं ए पब्लिक अकाउंट कमिटी सीएजी को डाकी की कहबो को मत बुझा कोन कोन खर्च होइछि कोन खर्च होइछि हमको बुझे की कह। सो सीएजी तांगर गोटे गाइड भलिया काम करे। एस्टिमेट कमिटी जते भी फाइनेंस कमिटी अछि सबुठु बड़ फाइनेंस कमिटी हला एस्टिमेट कमिटी 30 मेंबर कमिटी एवं सबुठु इंपोर्टेंट हला सब लोकसभा रु एवं एथरा मिनिस्टर नांती सेम 1 ईयर to report what improvement in the organization with the policy underlying the estimate may be elected। ये अगर रिपोर्ट देखिदेले कि कोंडी कोन खर्च होइछि ठीक ठाक हेइछि ना नहीं जहाँ डिमांड करथिले से अनुसार से जगह खर्च करिछ ना नहीं आउ ए माने बेसिकली आउ इंप्रूवमेंट कोन दरकार ताको एस्टिमेट करिवे। देन कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग सेम 22 मेंबर 15/7
मिनिस्टर एलिजिबल नुह एग्जामिन द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग माने कौन पीएसयू गुड़ा सब जे सब पीएसयू रो खर्च पैसा ठीक ठाक होइछ ना नहीं ता विषय से माने एग्जामिन करिवे आ रिपोर्ट कहार देखिबो सीएजी रो 7 from IAS and OAS Committee on Public Undertaking. कमिटी ऑन पब्लिक हाँ आरएस ही हो 15 पर लोकसभा 7 पर राज्यसभा लोकसभा लिखा यही भूल रहे हो राज्यसभा हो यूपीएससी आसले यार क्वेश्चंस आसले या देन देखिए अदर कमिटी जोटा कि किसी डिपार्टमेंट किसी कही बहुत सारा कमिटी अच्छी टेम्पोरारी कमिटी जोटा कि गोटे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी ये फिक्स स्टैंडिंग कमिटी फिक्स एडक कमिटी है टेम्पोरारी स्टैंडिंग कमिटी रे 31 मेंबर था 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा a minister is not eligible to be nominated to the this committee 2004 the number of जोटा कि departmental standing committee was raised to 24 from 17 then एबे बर्तन 31 अछि ये कौन करे consideration of demand for grants examination of bills consideration of annual reports consideration of national basic long term policy documents presented to the house तो ये बिल वगैरह एनुअल रिपोर्ट ये सब ताकू एग्जामिन करे कंसीडर करे कि केते कोन डिमांड हेची कोन हेची ताकू नजर रखिया पई एवं बूथ हाउस रो रहंती एवं 31 मेंबर रहंती इवन ये एस्टिमेट कमिटी रु भी अधिका मेंबर एस्टिमेट कमिटी 30 मेंबर एटा 31 मेंबर अछंती देन कमिटी ऑन पिटिशंस 15 मेंबर लोकसभा 10 मेंबर राज्यसभा टू एग्जामिन द पिटिशन द बिल्स मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपोर्टेंस मानि लियो किसी बिल सरकार आनी से बिल उपरे डिस्कशन होवार अछि ता उपरे कोन कोन पिटिशंस आछि पिटिशन पड़ी सिमिलरली कमिटी ऑन प्रिविलेजेस 15 लोकसभा 10 राज्यसभा सेम टू एग्जामिन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस इन द हाउस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हाउस रे अछि देन एथिक्स कमिटी रिसेंटली न्यूज रे थिला महुआ मित्र केस रे टू एग्जामिन द केस ऑफ मिसकंडक्ट एंड रेकमेंड एप्रोप्रिएट एक्शन कमिटी ऑन प्रिविलेज माने हाउस रे और प्रिविलेजेस अछि अंडर आर्टिकल 105 सो से प्रिविलेजेस को ब्रीच जेमती करि परिबनी या ये ब्रीच कला ताको एग्जामिन करिया पई ये कमिटी एग्जामिन करि परिबो एवं जुडिशियल सेट में कोआ जे सेमी जुडिशियल इन नेचर सो ये प्रिविलेजेस कहा मिनिस्टर एगेंस्ट भी करा जाई परिबो committee on government assurance similarly 10 members 15 25 total 10 member from Lok Sabha Rajya Sabha अधिका अछंती एबे देखो एठी लोक सभा अधिका थिले to examine the assurance promised and undertaken given by minister for time to time on the floor of the house committee on subordinate legislation that is 15 member Lok Sabha 10 member Rajya Sabha to examine the whether power to make laws rules etc delegated by the parliament to executive are being properly exercised or not committee on paper laid on table 1510 to examine all papers laid by the minister to see whether she comply करुचंदी with provision of constitution or related act of the rule committee on welfare for SC ST 30 member अछंदी 20 from Lok Sabha एटा very important basically SC national commission for SC and ST जो report देजी ताको examine करिया पे ये help करे committee SC और ST वेलफेयर पई ये 30 मेंबर कमिटी गोटे पाइबो
Then committee on empowerment of women, same 30 member committee, same national commission for women जो अच्छी तार रिपोर्ट को एग्जामिन करे, ये वुमेन रिलेटेड रेस्पेक्ट ये काम करे. जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, total 15 member, 10 from Lok Sabha, 5 from Rajya Sabha, to examine the composition and character of committee and other bodies appointed by government, central state, to recommend whether person holding this office should be disqualified or not. Then business advisory committee, 15 member Lok Sabha, including speaker as a chairman. एटा गोटे कमिटी जे कि स्पीकर से चेयरमैन अच्छा, and 11 member in Rajya Sabha including chairman as a ex officio chairman. हाउस रा टाइम टेबल प्रोग्राम ये सब डिसाइड करा जाए भितर. बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, डन. नेक्स्ट देखिवा स्टेट लेजिस्लेचर. इंडिया गोटे फेडरल स्टेट प्लस पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेजिस्लेचर हमर दुटा लेवल अछि, गोटे यूनियन लेवल और गोटे स्टेट लेवल. स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट 6 आर्टिकल 168 टू 212 जोटा कि ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन ड्यूरेशन ऑफिस पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. सो यार रिलेटेड इंपोर्टेंट आर्टिकल देखिए. आर्टिकल 168 रु स्टार्ट होची कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन द स्टेट्स. 169 एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ द स्टेट्स. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. लेट्स सी काउंसिल इथर क्वेश्चंस आसीबो काउंसिल ऊपर. कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, composition of legislative councils, duration of 172, duration of legislature, qualification 173 of the members of state legislature, right of the governor to address and send message to the house, article 175. 177 rights of the minister and advocate general तांकर rights कोन. Related to officers of the legislator, 178 speaker and deputy speaker जे कि officer से माने दिजन. 179 vacation and resignation of or removal from the office of the speaker or deputy speaker, chairman and deputy chairman of legislative council. 182 190 disqualification related to vacation of the seats, and 191 disqualification of membership. Power privileges 194. पार्लियामेंटर पावर प्रिविलेजेस कहा अंडर अच्छी आर्टिकल 105. लेजिस्लेटिव प्रोसीजर प्रोविजन एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ पासिंग ऑफ बिल 196. रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू बिल अदर देन मनी बिल 197. 198 स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल. 199 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल एंड 200 हला असेंट टू द बिल. 201 है बिल रिजर्व फॉर रिकनसिडरेशन. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट कहना ये न्यूज रो अच्छी शायद आर्टिकल पचारि पारे या ऊपर. 202 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोटे स्टेट रे, एंड 203 213 वाला पावर ऑफ द गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस. से इथर केते अछि प्रेसिडेंट 1 2 3. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर देखिवा गवर्नर आउडेला स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर जदि यूनिकैमरल थिबो, यूनिकैमरल माने केवल लेजिस्लेटिव असेंबली थिबो, ताले केवल लेजिस्लेटिव असेंबली. बाई कैमरल रहिले अपर हाउस गोटे रहइबो जोटा कि विधान परिषद, लोअर हाउस जोटा कि विधान सभा. बाई कैमरल कोंडी कोंडी अछि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना इन यूपी.
बाइकैमराल कौन इंट्रोड्यूस कराइथिला मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म रे 1919 जोंटा कि 1935 रे ताको एक्सटेंड कराइथिला सेंटर रे इनिशियली स्टेट रे इंट्रोड्यूस कराइथिला सॉरी इनिशियली सेंटर रे इंट्रोड्यूस कराइथिला तापर स्टेट रे इंट्रोड्यूस करागला 1935 रे क्लियर समस्त रीति पर्यंत क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ सेकंड चेंबर ऑफ स्टेट्स कान एटा न्यूज रे अछि हमर स्टेट रो न्यूज नहीं हमर रिजोल्यूशन पास करी पठैथिले आर्टिकल 169 of the state legislative assembly can pass resolution with special majority जानि छ special majority रे पास होबा दरकार and the process does not involve amendment of the constitution. Parliament can abolish the state legislative council or create it by simple majority if Lok Sabha passes resolution. Sorry, Lok Sabha legislative assembly passes resolution. माने creation हो या abolition हो कहाँ पर responsibility रहिला Parliament. But Parliament करिवो on the advice of state legislative assembly. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली केमती कहिबो से स्पेशल मेजॉरिटी पास करके एठी रिजोल्यूशन पास करी पठेबो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो देन क्रिएशन होबो ए सिमिलरली इन केस ऑफ एवोल्यूशन क्लियर स्पेशल मेजॉरिटी काहे कोनी म ऑलरेडी कहि छी स्पेशल मेजॉरिटी केमती पास होबो कंपोजिशन ऑफ टू हाउस स्ट्रेंथ कोन लेजिस्लेटिव असेंबली रो मानि नियो मिनिमम स्ट्रेंथ 60 थाए मैक्सिमम 500 जोंडे यूपी रो सबुठो अधिक 500 नहीं 400 सो किछि जगह एक्सेप्शन अछि जोंडे कि अरुणाचल प्रदेश रो 30 टा गोवा रे 40 टा 40 टा 30 टा गोवा रे 40 टा सिक्किम रे भी सेमती 30 टा मिजोरम रे 40 टा नागालैंड रे 44 टा एमती अछंती गोवा रे 30 टा बोले ना गोवा हाँ 30 टा गोवा रे 30 टा ठीक अछि ओके सो लेजिस्लेटिव काउंसिल कोन तार मिनिमम स्ट्रेंथ थला 40 आ कोन को बेसिस रे डिसाइड करा जाय 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बुझिल नै लेजिस्लेटिव असेंबली रो 1/3 40 ना सेरा मो माइंड रास्तला मने गोवा 40 हबो ओके so 1/3 of total strength of legislative assembly हबो legislative council माने मानिने ओडिसा रे 150 टा हमर legislative assembly रो सीट अछि एमएलए अछंती ता माने 1/3 अवतार ता माने केते हबो 50 राइट so annual strength of the council fixed by parliament annual strength of the house जोंडे कि parliament fix करियो सॉरी actual strength normally पाखा पकी से 1/3 रुए बट डिपेंड करे कि कोंटी कोन केमती अछि लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन तो समझ जानि छ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज ए केसेस रो ए बेसिस रो हुए बट एठी काउंसिल रे 1/3 बाय द मेंबर ऑफ लोकल बॉडी जने कि म्युनिसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ए सब करंती 1/3 बाय मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली and 1/12 by the graduates of 3 years standing and residing within the state and 1/12 by the teachers of 3 years standing in the state and not lower standard than secondary school. So last data I think this is like graduate of the graduates of 3 years जे कि ओडिसा रे रहउथबो ग्रेजुएट थिबो आउ 3 years standing in the state state not lower than sorry residing within the state बुझियला तो इवन क्यों ना I is not in the standard member करने के लिए स्कूल
कौन है पर्सन माने को पर्सन माने सेटा ही डाउन करते माने एटा चूज करा जीवो ग्रेजुएट सेथिवा दरकार जे कि ओडिसा रे थिबा दरकार रिसाइडिंग करथो विद इन द स्टेट नॉर्मली माने चूज करथि जो माने इलेक्शन होनी कॉलेज प्रेसिडेंट वगैरह हाँ तांको भीतर टीचर्स भी इलेक्शन होता है टीचर्स भीतर तांको भीतर बुझिला ने तो नॉर्मली सेही भीतर हुए तांकर कमिटी नहीं टीचर्स मान को यूनियन अच्छी कमिटी अच्छी तो तांको भीतर सो गवर्नर्स नॉमिनेशन केते जण केते थांती वन मेंबर थाई लेजिस्लेटिव असेंबली रे जोंटा के एबे नाही 104th कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव कराई छी बोथ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली रे 1/6 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ गवर्नर नॉमिनेट करिवो लेजिस्लेटिव काउंसिल केस रे so duration कौन ना normal term 5 year however governor can dissolve the assembly at any time जानिछ लेजिस्लेटिव असेंबली कथा कहउची इट कैन एक्सटेंडेड जदि जेतळे प्रेसिडेंट रूल वगैरह लागि थिबो सेतळे एक्सटेंड करी हबो बट इट कंटिन्यू जेमति राज्यसभा इट इज ए परमानेंट हाउस but 1/3 of the member retired every 2 years like in Rajya Sabha. Membership of state legislature the qualification for membership of state legislature कौन citizen of India इतना दरकार ये सब थी दरकार 25 years of age 30 years for legislative council by age limit राज्यसभा रे जहाँ यार से by parliament representation of people act under must be elector of an assembly constituency of the concerned state for governor nomination must be resident of the concerned state to contest seat reserved for SC ST person must be an SC ST respectively बुझेला these are the qualification required to be member this is very important member of state legislature then disqualification being chosen as an for being a member of legislature state legislature under the constitution if he holds any office of profit under the union or state government say condition disqualify hejibo if he is of unsound mind and stands so declared by the court kala ye bhai pagol hi jaichi he discharge insolvent in the citizen of not a insolvent and or not a citizen of India or voluntarily acquire the citizenship of other state सेतळे से भी डिस्क्वालिफाई हो ऑटोमेटिकली जेमती विजय माल्या थिला कौन थिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थिला कोन बेसिस रे थिला एंग्लो इंडिया कम्युनिटी रो तो ताको डिस्क्वालिफाई करा जायनी बाय द पार्लियामेंट अंडर रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 सिमेटर जेमती पार्लियामेंट जहा अछि जो बलिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन 10th शेड्यूल रे जदी तुमे कोन हिजो अलगा पार्टी के जॉइन करिवो ये सब अच्छी आउ कौन कौन मोर देन 2/3 जदि न होइथिबो 2/3 रो अधिक पार्टी किबा तुम इंडिपेंडेंट छिड़ा हिथिबो अलगा पार्टी के जॉइन करिथिबो सेते डिस्क्वालिफाई हिजिवो नॉमिनेट मेंबर भी 6 मास भीतर जॉइन करि परिबो नले पर डे हेले डिस्क्वालिफाई सो इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन करिवे इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर करिवे 10 शेड्यूल अंडर राइट सो ये गला तुमरो डिस्क्वालिफिकेशन एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोन ना इलेक्शन बेसिकली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे स्पीकर असेंबली रहिबे डेप्यूटी स्पीकर रहिबे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर केमथि हेबे से मेंबर भितरु डेप्यूटी स्पीकर भी मेंबर भितरु हेबे टर्म लाइफ ऑफ द असेंबली एंड सेम vacation of office before expiry term if he ceases to be a member of the assembly if he resign by the writing to deputy speaker if he is removed by the resolution passed by majority of all then members of the assembly तांको 14 days notice दिया जिवो एठी भी सेम कंडीशन बट ये रिजाइन देबे काहा को स्पीकर को ये रिजाइन देबे काहा को डेप्यूटी स्पीकर को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर सेती फरक एटा वेरी इंपोर्टेंट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तांकर जने चेयरमैन रहिबे आ जने डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा रे चेयरमैन के रहउथले वाइस प्रेसिडेंट एठी तो कई वाइस गवर्नर नांती तो एठी जो तांकर चेयरमैन हेबे सी अमंग इट्स मेंबर हेबे
ये यूपीएससी रे क्वेश्चंस आस्थिला इरा So election of a council chairman be among its member এবং council of deputy chairman be among its member. If he ceases to be member of council, if जदि से resign दे देले deputy chairman को, then same जिनस तांकर removal बाकी legislative council and legislative assembly दीटा जाको process सब समान माने member सेठी ना खाली chairman deputy chairman ही जीवो but स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन डेप्यूटी स्पीकर भाया फंक्शन एटी देखियो पावर ऑफ द चेयरमैन सिमिलर टू दोज ऑफ स्पीकर एक्सेप्ट व्हेन स्पीकर डिसाइड अबाउट द मनी बिल सो डेप्यूटी चेयरमैन परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन ऑफ द ऑफिस इफ चेयरमैन जदि वैकेंट रहइबो कि एब्सेंट रहिले इन बोथ केसेस डेप्यूटी चेयरमैन हैज ऑल द पावर ऑफ द चेयरमैन ऑब्वियसली जेतले आमे देखिथिले भाइस प्रेसिडेंट केसेस रे चेयरमैन जति नथिबे सिए ताले डेप्यूटी चेयरमैन तांको काम करिवे एवं सी पावर एन्जॉय करिवे एज ए चेयरमैन भलिया ड्यूरेशन 5 ईयर तारो सेमिति किछि नाही परमानेंट गवर्नर मे डिजॉल्व 5 वर्ष हेले इन केस ऑफ प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी द टर्म ऑफ 5 ईयर कैन बी एक्सटेंडेड 1 year at a time till 6 months after the proclamation of cease to be effect. State Legislative Assembly Council no subject out of dissolution 1/3 member every second year and Legislative Council a permanent body like Rajya Sabha. Legislative procedure of State Assembly same Parliament भलिया जो देखिया after passing money bill presented to President सी assent दे पारंती नहीं न दे पार withhold his assent or cannot return the reconsideration रिटर्न करि परिबे नाही स्टेट लेजिस्लेशन गवर्नर कोन करिवे एसेंट देई परिबे विथहोल्ड इज एसेंट कैन नॉट रिटर्न करि परिबे नाही और रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट एटा इंपोर्टेंट आ रिजर्व रखिला जदि प्रेसिडेंट पई सी एसेंट देई परिबे विथहोल्ड करि परिबे बट रिटर्न करि परिबे नाही बुझल नाही टिके एटा डिफरेंस अछि बाकी सब समान जी रिजर्व केस रे पार्लियामेंट आउ पार्लियामेंट बुझी गले स्टेट लेजिस्लेचर किछ नाही बट खाली एठी गोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि थकिलणी ना नाही थकिन तो हां स्टेट एग्जीक्यूटिव देखिए पुणी स्टेट एग्जीक्यूटिव हाईएस्ट बॉडी किए गवर्नर सीएम काउंसिल मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट Article 153 to 167 part 6 of the constitution जोंडे कि state executive deals करे governor under article 153 provides a governor for each state and the 7th constitution amendment of the 1956 कौन ना same person governor है परिबो 2 or more state रे so appointment president by warrant under his hand and seal क्वालिफिकेशन सिटीजन ऐथिया दरकार he should completed 35 years आउ कोन नॉर्मली बिलीव करे आउटसाइडर है दरकार स्टेट रो आ प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट द सीएम ये सब जरूरी नहीं एक्चुअली सीएम रो कॉन्करेंस रिक्वायरमेंट नहीं कंडीशन फॉर गवर्नर ऑफिस गवर्नर कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और एनी अदर स्टेट लेजिस्लेचर इफ ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर इज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ एनी स्टेट्स ताको छाड़िया पड़ो जमी प्रेसिडेंट केस रे कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड द पार्लियामेंट डिटरमाइंस द एमोलमेंट्स अलाउंसेस सो के डिटरमाइन करे पार्लियामेंट काहे कि सेंटर ही ताको अपॉइंट करी पठै छै सेति पई याको कहा जाय एजेंट ऑफ ए सेंटर चला
oath by chief justice of concerned high court, এটা very important मन रखिबो, and in absence of chief justice जदि नथिबे ताले कोन हबो senior most judges of the high court ये करिवे. Transfer from one state to another state by president करि परिबे, and resignation सही president को देबे सी काइना सही अपॉइंट करचंती 5 वर्ष टर्म, बट सेमिति किछि नाही, तांको जेतले चाहे सेतले हटे देबे. एबे मोदी जी सरकार पळेबे, जेते सब गवर्नर छन सब पळेइबे, केही रहिबे नाही. Dismissal by the president at whose pleasure he holds the office. So तांको केतले चाहिले भी से डिसमिस करि परिबे अंडर आर्टिकल 156 and 156(2) अंडर रेजिग्नेशन दे परिबे. आ को ग्राउंड तांको रिमूवल करिवे किछि कहिया जरूरी नाही, या किछि कॉन्स्टिट्यूशन सेमति किछि मेंशन नाही. जेतले चाहिले सेतले हटि परिबे, जेमति चाहिले सेमति हटि परिबे, राति अधरे चाहिले भी हटि परिबे. Then power and function of the governor, सेमती executive power, legislative power, ये सब all executive action of the government government of a state तांको नारे हुए. He can seek any information relating to administration of affairs of the state and proposal for legislation from chief minister. He can make recommendation to the president to impose constitutional emergency. State रो जो president rule या constitutional emergency ताको कुआ जाए सेतळे ये रेकमेंड करि परिबे. He acts as a chancellor of a university in the state. So he also appoint vice chancellor of university. एठी नै कि इशू आरसिला वेस्ट बेंगल ले, वेस्ट बेंगल जे गवर्नर अछन से कहले लेखाई जे देखो एठी मु अपॉइंट करि परिबे. भाई तुमे किछि करि परिबोनी, तुमे एडवाइस नबो सीएम पाकरू कोइ लेखाई ही आल्सो अपॉइंट. सेमती तो प्रेसिडेंट पाखरे बहुत किछि लेखाई छि, आ प्रेसिडेंट सब जदि करिया लागले मोदी जी के दरकार कोन. He appoints the chief minister, the other subordinate minister, the advocate general of states, state election commissioner, and his condition of the service and tenure of office, chairman and member of state public service commission. ये समस्त कर ये अपॉइंट करिवे जेमिति हमरो प्रेसिडेंट करूथले. स्टेट इलेक्शन कमिशन करि परिवे, स्टेट रो जो एडवोकेट जनरल करि परिवे, आउ स्टेट इलेक्शन कमिशन करि परिवे. माने स्टेट इलेक्शन कमिशन काम कोन ओके. देन देखिवा लेजिस्लेटिव पावर. गवर्नर ऑफ स्टेट सेम समान prorogue the house, can dissolve the house. He can both when both office of the speaker and deputy speaker जदि vacant रहिबो, then governor appoint करि परिबे member of state legislative assembly किछि member को any member को appoint करि परिबे preside करिया पई. Governor can reserve the bill for president consideration, any bill by the state legislature which endanger the position of the state high court against the constitution provision or opposing the DPSP. एई केसेस रे जदि किछि बिल आस्थिबो सेई केसेस रो रिजर्व रखि परिबे, बट एबे सबु केसेस रे रिजर्व होछि बिल. He nominates 1/6 of the member of state legislative जोंडा कि legislative council पई जदि थिबो जोंठी legislative council थिबो. Art, science, literature, cooperation, movement and social service. He can promulgate ordinance when state legislature is not in session. Ordinance must be approved by the state legislature within the 6 weeks of its जोंटा कि सेठी भी आमे देखिथिले है ना. It lays report of state finance commission report रखिबो legislative assembly रे. State public service commission, CAG related information state legislature रखिबे एवं से सब लोक देखिबे, सब अकाउंट्स रिलेटेड भी मध्य देखिबे. स्टेट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रे हमरो नॉमिनेशन पे आउडे ग्राउंड दा एडी राजसभा चारिटा ग्राउंड अछि नॉमिनेशन पे. एठी कोऑपरेटिव मूवमेंट जो अछि सेटा गोटे ना मिसी कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सेटा गोटे. फाइनेंस पावर confirms that state budget or annual financial statement laid before the state legislature. Money will introduce kara jibo तांकर prior recommendation. Demand for grant can be made only on the governor recommendation. Review the financial position of panchayat and municipality. The governor constitutes finance commission every 5 years. जेमती president करूथले finance commission of India. एटा के कोउथ रही छी, एटा आगुर नथिला 73rd constitution amendment act रे ही छी एटा.
To meet any unforeseen expenditure, he can make advances out of contingency fund of the states. Judicial power, governor consulted with by the president while appointing the judges of the concerned state of high court. So state high court judges को उठ किए दियंती हाई कोर्ट जजेस को उठ किए दियंती श्योर प्रेसिडेंट करंती बट गवर्नर को कंसल्ट करंती कि याको करिवार नहीं बट गवर्नर भी किसी कंसल्टर तांका जरूरी नहीं काहे कि डिसाइड करा जाए कॉलेजियम थ्रू he makes appointment posting and promotion of the district judges in consultation with state high court he appoint person to the judicial service of the state ओडी OJS ओडिशा judicial service आसे नहीं other than this in the consultation with state high court and state police service commission mercy power the mercy power माने जोटे की pardoning power governor can grant pardon reprieve respite remission of the punishment or suspend however governor cannot pardon death sentence जोटे कि हमें सेटा को देखथिले प्रेसिडेंट केसेस ओनली प्रेसिडेंट हैव द पावर आउ कोर्ट मार्शल या थ्रो रे हबनी मिलिटरी कोर्ट एटा नुह है ना डेथ सेंटेंस रे हबनी ये पावर गवर्नर पाखरे नाही special power and responsibility of the governor under the articles 371 to 371J Nagaland case re 371A with respect to law and order in the state for so long as the internal disturbance on Naga Hills NSCN जोटे की कह जाए Naga Hills तुनसंग एरिया NATA जोटे की कंटिन्यू चलची एबे से केसेस रे यांको स्पेशल पावर दिया जी गवर्नर हैंडल करि परिबे विथ रेस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया आसाम रे आर्टिकल 371 बी मणिपुर रे with respect to administrative hill area in the state मणिपुर रे एबे कॉन्फ्लिक्ट चलची 371 सी regarding law and order in the state अरुणाचल प्रदेश रे 371 एच काहे कि ना अरुणाचल प्रदेश बेसिक सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ रे नैची गवर्नर थ्रो माने सेंट्रल गवर्नमेंट काहे ना बॉर्डर स्टेट चाइना ताको क्लेम करे हमर बोली Sikkim 371F for peace for ensuring social and economic advancement of the different section of the population. Sikkim re एवं Gujarat re establishment separate development board for Saurashtra and Kutch region pai undeveloped area Gujarat re 371 एवं Maharashtra re establishment of separate development board for Vidarbha and Marathwada region pai ये सब स्पेशल पावर दिया अंडर आर्टिकल कहा रही थी अंडर कौन शेड्यूल रही थी बेटा 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे 5th शेड्यूल केमती आछो 5th शेड्यूल के अछि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल केतेटा स्टेट अछन ता भितरे discretionary function of governor he can give or withhold assent to the bill return a bill for reconsideration of house concern of both houses also act in his discretion in the case of reservation of bill जोटे कि प्रेसिडेंट पई रखंती एडवाइज द प्रेसिडेंट इश्यू ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जोटे कि प्रेसिडेंट रूल दिया जो नहीं एडवाइज करि परियो यूज हिज डिस्क्रिप्शन व्हाइल एक्सरसाइजिंग फंक्शन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन टेरिटोरियल यूनियन टेरिटरी governor like president can enjoy situational or circumstances discretion जोटे कि हमें देखिले issue relating to office of the governor lack of objective criteria for untimely dissolution while article 174 gives power to governor to dissolve the assembly but constitution is silent on as to when or under what circumstances house can be dissolved eta कोहाई नहीं सुप्रीम कोर्ट टाइम कोहाई छी political reason being cited for the dissolution कदे कदे जानि बहुत सारा हाउसेस डिसॉल्व कराई छी बहुत सारा ही रिसेंटली कम से कम 13-14टा स्टेट रे डिसॉल्व कराई छी हाउसेस प्रेसिडेंट माने गवर्नर एक्ट जुगु मिसिंग पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इन द गवर्नर ऑफिस जोंटे कहउथली जोंटा अपोजिट पार्टी जो स्टेट रूल करचंती सेही स्टेट रे गवर्नर प्रॉब्लम क्रिएट करूची बिल रिजर रखि दउची मन इच्छा वाइस चांसलर को अपॉइंट करूची बट जो कंडीशन पार्टी इन पावर होची सेटा होनी सो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रहउनी एमएम पुंची कमिशन कहितला गवर्नर शुड फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन
ये वेरी इंपॉर्टेंट पुंछी कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन in a case of hung assembly constitutional it suggested a provision of localized emergency by which the center government can tackle issue at town or district level without dissolving the state legislative assembly. Similarly, Supreme Court Judge SR Bomai case re very important judgment thila 1994 they could accorded primacy to a floor test maybe hoji as a check of majority. They could also said that एसआर बोमाई केस रे कोन could accorded primacy to full floor test जे कि फ्लोर टेस्ट करिकी प्रूव करा दरकार could also said that power under article 356 is extraordinary and must be used wisely not political gain. Rameshwar Prasad case 2000 Bihar governor recommendation for dissolving the assembly in the previous year was held illegal and malified. Governor cannot shut out post poll alliance altogether as one of the way in which popular government may be formed. So post poll alliance भी हेई परियो तो मैंने कि पूर्वरु alliance अछि सरकार हेई परियो नो सरकार गवर्नमेंट फॉर्मेशन हैला पर भी हेई परियो ये केस एसला रामेश्वर प्रसाद केस एसआर बोमाई पुंछी पच्छी चीफ मिनिस्टर he is the head of the government and real executive de facto and सेठी केते थिला 75 and state that chief minister shall be appointed by governor. Generally the leader of the majority party here hung assembly रहिले governor जे कि largest party ताकू करिवे and oath किए नबो governor नबो term सेमती किछि फिक्स नाही जते वर्ष एन्जॉय कले कॉन्फिडेंस पावर से काउंसिल रिलेटेड टू सेम जिंस रिसफल करिवा अपॉइंट करिवा डिसाइड करिवा ये सब किछि करिवे गवर्नर को कम्युनिकेट करिवा सेम प्रेसिडेंट केस रो एंड स्टेट लेजिस्लेचर केस भी गवर्नर को एडवाइज करिवे समन करिवा प्ररोग करिवा जॉइंट सिटिंग करिवा जदी केतले पॉसिबल हुए सीएम एन्जॉय द सम अदर पावर एंड फंक्शन चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड दिस इज इंपोर्टेंट acts as a vice chairman of the concerned zonal council rotation holding office period of 1 year at a time, member of interstate council and national development council both headed by prime minister, act as a manager in chief at the political level during emergency. So CM council minister 163 council minister aid and advice to the governor 164 CM shall be appointed by the governor and other ministers shall be appointed by governor on advice of the CM. Council minister collectively responsible to state legislative assembly. A minister who is not a member of state legislature for any period of 6 consecutive months shall be ceased to be minister. जानिजो ये सब जानिजो. These are all. The number of minister including CM जोंडे केते होवा दरकार 15% 177 article कोन every minister shall have the right to speak or take part in the proceeding of the assembly or any of its committee but not entitled to vote. Collective responsibility 164 individual responsibility say 160 each minister is responsible to governor for department under their care. In case of difference of opinion CM can ask him to resign. Then advocate general article 165 advocate general of the state गवर्नर अपॉइंट करिवे एवं जज ऑफ द हाई कोर्ट रो सेमती क्वालिफिकेशन तांकर थिबा दरकार एंड हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस हेथिबा दरकार हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस ऑफ ए स्टेट फंक्शन एज ए लीगल मैटर देखंती जेमती अटॉर्नी जनरल ये भी सेमती एडवोकेट जनरल ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट तांकर टर्म फिक्स नाही किछि जेतले चाले सेतले हटै परियो रेजिग्नेशन देबे काहा को गवर्नर को देबे. So that's it for today. Thank you. Next class मु नेबे तुमरो पंचायत municipalities and probably next Sunday काली अछि देखिया काली तो टेस्ट थी बोधे
next Monday nabi. Panchayat governor and constitutional bodies. Thank you guys. Thank you for watching. God bless you all.